रसूल हो बसंत पतझड़ जाए, महावीर भक्त बन करके निहारा है। और विश्व शांति दूत बन करके अवतार लिया, गुरुवर विद्यासागर जी को नमन हमारा है। गुरु समय सागर जी को नमन हमारा है। पूज्य मुनि त्रिवल सागर को नमन हमारा है। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बहुत बहुत आभार आपका। देखिए तालियां स्वयं आने लगी, मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। संजय जी समय अब आप आ जाएं, एक बार कर लेते हैं, क्योंकि मनुष्य आएंगे तो हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर लेंगे। तो हमारे बीच में विद्वान प्रतिष्ठाचार्य श्री संजय जी शास्त्री हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी हम करतल ध्वनि से स्वागत करें, और वो अपने कंठ साधना से इस सभा मंडप का मंगल मंगल गाएंगे। धन्यवाद। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्रोमणी श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री दुर्लभ सागर महाराज की जय हो। पूज्य मुनि के चरण जहाँ पड़ जाया करते हैं, ऐसे दुर्लभ सागर जी के दर्शन बड़ी दुर्लभता से हमें प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के श्री चरणों में अपने इन 4 पंक्तियों को समर्पित करता हूँ। थोड़ा ट्रेवल खोल देना। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, दुर्लभ सागर जी तुमको नमन हो नमन, जब से पड़े हैं चरण है यमन ही यमन। चूँकि मुनिवर को सुबह हमने जब देखा सुना तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि इतना अथाह ज्ञान मूर्ति विज्ञान के विषय में पूज्य श्री को है। उन्होंने इतनी गुणता के साथ उस विषय को प्रतिपादित किया, तो उनके चरणों में लिखने का प्रयास किया है कि आपके ज्ञान का जो मिला आसरा, आपके ज्ञान का जो मिला आसरा, दुख तो कट जाएंगे शुभ होंगे करम, जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, दुर्लभ सागर गुरुवर नमन हो नमन, जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन। और पुनः 2 पंक्तियां कि संयम का शोभोदीप जलाकर आत्म को उजियार लिया है, संयम का शोभोदीप जलाकर आत्म को उजियार लिया है, और नहीं दुर्लभ सम कोई ये सब ने स्वीकार किया है। दुनिया का सब बाना तज के भेष दिगंबर धार लिया है, ऐसे लगा कि फिर से धरा पर गुरु विद्यासागर ने अवतार लिया है, ऐसे लगा कि फिर से धरा पर विद्यासागर ने अवतार लिया है। और कहा है कि कैसा उनका स्वरूप है कि दुर्लभ के स्वरूप दुर्लभ ही मिलेंगे हमें, साधना उपासना में गुरुवर को निहारिए, दुर्लभ के स्वरूप दुर्लभ ही मिलेंगे हमें, साधना उपासना में गुरुवर को निहारिए। गुरु ही से गर्भ है रे, गुरु एक पर्व है रे, गुरु की चरण रज रजत को धारिए। गुरु ने ही ज्ञान दिया, ज्ञान ही महान बना, गुरुवर की भक्ति कर आरती उतारिए। और गुरुवर है वसंत संत, गुरु एक ग्रंथ है रे,
गुरु को नवा के शीश जीवन संभारिए, गुरु को नवा के शीश जीवन संभारिए, गुरु को नवा के शीश जीवन संभारिए। कि इस युग का सौभाग्य ही, इस युग का सौभाग्य यही कि इस युग में गुरु दुर्लभ सागर के गुरुवर जन्मे। इस युग का सौभाग्य ही कि इस युग में मुनिवर के गुरुवर जन्मे, और हम सबका सौभाग्य ही कि मुनि दुर्लभ सागर के युग में हम जन्मे। जन्म जन्म तक ये युग ही आचार्य श्री विद्यासागर के नाम से जाना जाएगा। और महावीर की श्रेणी में गुरु विद्यासागर का नंबर भी आएगा, गुरुवर का नंबर भी आएगा। बोले मुनि संघ की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएगा हमारे बीच में संजय जी शास्त्री, जिन्होंने बहुत अच्छा मंगलाचरण रखा। और पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज हमें हमारे सौभाग्य से पुनः दोपहर की सभा में प्राप्त हो रहे हैं। तो बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर महाराज मुनिश्री को प्रणाम कर कर अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए और इस गरिमामय कार्यक्रम को। वो सूरज थे जिंदगी की रमक छोड़ गए, वो सूरज थे जिंदगी की रमक छोड़ गए, वो अस्ताचल पर अपनी चमक छोड़ गए। हम नाम पद प्रसिद्धि के लिए भागते रहे और आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जाते जाते अपना आचार्य पद भी छोड़ गए, वो अपना आचार्य पद भी छोड़ गए। एक बार जोरदार आचार्य श्री के लिए हम यहाँ जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए जीवंत समय सार श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। मुनिश्री आकाश जी, मुनिश्री आज द्वितीय दिवस के दोपहरी सत्र को प्रारंभ करने के लिए आपका आशीर्वाद और अनुमति। बहुत बहुत आभार मुनिश्री का, हमें मुनिश्री से अनुमति प्राप्त हो गई है। बंधुओं, अब हम चलते हैं भैया। बैकग्राउंड हल्का कम कर दीजिए, बहुत बहुत लाइट प्लीज। चलिए, बड़े मन के साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में योगानंद जी, और साथ ही साथ में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे बीच में प्रमोद जी। दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए अपना वक्तव्य रखने के लिए। और सबसे पहले मैं योगानंद जी का परिचय दे रहा हूं। आपने 1991 में भारतीय, चलने दीजिए लाइट, बैकग्राउंड चलने दीजिए म्यूजिक। आपने 1991 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर भारत के से संरचनात्मक इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त की। जब वे कर्नाटक राज्य की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में काम कर रहे थे, डॉक्टरेट की डिग्री के लिए उनका शोध प्रबंधन अप्रबलित चेन्नई वॉल्ट पर था। वे 1979 से 1993 तक एक्स्ट्रा केंद्र और आईसीएससी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वैकल्पिक भवन प्रौद्योगिकी पर किए गए शोध और विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने मृण्मयी नामक एक परामर्श फर्म शुरू की, जो मिट्टी के ब्लॉकों का और निर्माणों के विकल्प का परामर्श फर्म है, जिसमें प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी है। और वे स्थिर मिट्टी के ब्लॉकों का उत्पादन करने के लिए मैनुअल रूप से संचालित मिट्टी ब्लॉक स्प्रेस मर्दनी के डिजाइन और विकास में शामिल है। साथ ही हमारे बीच में प्रमोद जी हैं। एवी प्रमोद जी 2009 में आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में वे विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बेलगांव से निर्माण प्रौद्योगिकी और प्रबंध में पीएचडी कर रहे हैं। वे मड ब्लॉक और बिल्डिंग के विकल्पों पर सलाहकार मृण्मयी के साथ में काम कर रहे हैं और डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म महिजा के साथ एसोसिएट्स और प्रिंसिपल कंसल्टेंट भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम दोनों का स्वागत करते हैं। एक बार हमारे बीच में पधार चुके हैं, आ जाइए सर। एक बार तालियों से स्वागत करिए। देखिए, ऐसे विद्वान हमारे बीच में पधारे हैं जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर विषय पर अपनी बातें रखेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, आप दोनों हिंदी भाषी हैं, कैन यू स्पीक इन हिंदी? अच्छा, देव गॉट लिटिल डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हिंदी। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी जो भाषा है वो सरल इंग्लिश में कहेंगे, तो सरल आंग्ल भाषा में ये बातें कहेंगे। जैसे हम साहित्यिक हिंदी कहते हैं वैसा नहीं कहेंगे, तो ऐसी हिंदी इंग्लिश में ये बातें रखेंगे अपनी, जो कि सहजता से आप सभी को बोधगम्य हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, ताकि वो भाषा जो है हमें बोधगम्य हो जाए। और इन दोनों के सर पर मुनिश्री का आशीर्वाद आपने ले लिया है, दोनों ने मुनिश्री को श्रीफल अर्पित कर लिया है इन्होंने। बहुत देखिए सुनने योग्य विषय इनके पास। इन्होंने जिस क्षेत्र पर
अपनी खुद की कहना चाहिए कला का उपयोग किया है, बहुत अच्छा किया है। आज मिट्टी पर और नींव पर काम करने वाले कोई बहुत कम लोग मिलेंगे। आपने मिट्टी पर नींव पे काम किया है, करोड़ों रुपया समाज के बचाए, बासा का लाखों रुपया आपके माध्यम से बचा है। लाखों नहीं बल्कि बहुत बड़ी राशि थी, करोड़ रुपया हमारा कम से कम बचा दिया आपने बासा में आकर, क्योंकि वहाँ के लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। जब इन्हें पूरी चीज़ें बताई, हमने इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, इस प्रकार से बनी, तब बासा की समाज ने एक्सेप्ट किया। पूरी प्रस्तुति इन्होंने वहाँ दी थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। ये बहुत योग्य इनका कार्य है, बहुत अच्छा। और महर्षि आजकल तो स्नान में भी मड स्नान होने लगा आजकल। हाँ सन स्नान तो मड स्नान भी होता है, मिट्टी के कीचड़ में केमिकल्स डाल करके उससे स्नान किया जाता है। हाँ, अभी उनके गुरु भी साथ आए हैं, पिछली बार तो वो आए थे। मैं अनुरोध करूंगा भाई प्रियंक जी से, वो ट्रांसलेटर का काम करेंगे। भाई प्रियंक जी। तो योगानंद जी और प्रमोद जी हमारे बीच में, जहां पर अगर आपको लगता है विषय जो समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता है, नहीं है तो फ्लो में सुनते जाइएगा, समय भी बचेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा करके बोलिएगा। हमारे बीच में प्रियंक जी हैं जो कि आपको उस विषय में हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाएंगे। चलिए तालियों के अनुगूंज के साथ में योगानंद जी और प्रमोद जी हमारे बीच में, माइक्रोफोन आपके हाथ में। आयुष है कि नहीं? आयुष, हाँ, ध्यान से देखो, ये बहुत काम का विषय है, जो लोग मंदिर की नींव के लिए बहुत उपयोगी विषय बता रहे हैं। Thank you. Namaste and pranam to all. This session is basically to share our experiences in construction for the last 40 years. So we have come across many examples. It could be residences, hospitals, schools. In the recent times, we have been involved in temple-related structures thanks to Priyank ji. मथुरा में प्रमोद के साथ कुछ काम हो रहा है. So I get to discuss all these activities with Pramod and Priyank. To begin with, I would like to say that we are very much focused on reducing material consumptions in structures. You can ask me why. The world we are now witnessing, there is a strong feeling that we are exploiting natural resources a lot. So we need to step back and understand what do we need. And need-based construction is something which is the need of the hour. But it is good to invest on artisans and improve the skills. If we look back and look at the kind of structures they have built, whether it is temples or temple-related structures, the kind of skill they have expressed, the structure expresses their skill. So we need to invest on artisans and their skills and improve the quality of construction and maybe conserve old structures. It could be temple or any community hall. It is good to recognize the importance of our heritage and invest on conservation in terms of conservation of the buildings. But at the same time, when we look at conservation in a sense of conservation architecture, it is also important to conserve material consumption. That's very important because materials are not finite. In the sense, materials are not infinite, they are finite. So, we have to be careful in using the materials with a better understanding of our needs because our wants have no limit, right? Where do we draw a line between our wants and need? Wants can be anything. Each individual can express their own wants, but needs are very common.
So it is good to look at our needs and build only to the extent what we really need so that we conserve natural resources and we will have a better environment, better quality of air, less pollution. I think this is a need of the hour. So our activity for the last 40 years has been in this direction. And most of our buildings, we use the local soil, mostly the local soil with stabilizers. So what are the stabilizers? It can be Portland cement or lime and lime pozzolana. That works like a binder. So without burning, we can produce a very good quality masonry unit like a brick or stone. That is something which we are generally using in all the construction activities. And it so happens in the Mathura example also, we have utilized the local soil with stabilizer without burning. This reduces the embodied energy. There is something called embodied energy. Any product which is a processed product consumes fuel. That fuel is nothing but the thermal energy. In fact, we have been eating breakfast, lunch, and all. All that is made using fuel. It could be electricity or gas or any other fuel. So, natural means it is unprocessed. When it is not processed, that is natural. But when it goes through a process, it acquires that embodied energy. So our idea is to see how best we can reduce embodied energy in buildings. Materials like cement, steel, glass, burn brick, all of them consume a lot of energy. And we have to be very careful and sensitive. We should utilize them only to the extent necessary. So that is the idea behind which we have been working in this field. And foundations is the topic of this session. It's a very important aspect of a structure. One is the foundation, then you have the superstructure, then you have the roof. All the three come together to make the building. So it is good to integrate all of them. Depending on the earthquake zones, one has to be very careful and understand the requirements given a situation. Soil also varies a lot. The kind of soil what I see here is a black soil. This demands an investigation which is generally called geotechnical investigation and understand the soil strata, and only then we can think of what kind of foundation is suitable. So that is what Pramod is going to present today.
आदमी के अंदर चिंतन होता है कि हमारी जो विरासत थी वो कहीं गुम हो रही है या हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, और वो आदमी प्रथा से हटकर शोध आदि करके उन चीज़ों को वापस लाता है, उसमें बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, बहुत समझाना पड़ता है। इन्होंने, आप सोचिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं पूरे मिट्टी के, 4 मंजिल के, ठीक है। आप सोचो कि लोग बोलते हैं कि मिट्टी की बिल्डिंग ढह जाएगी, लेकिन उसकी रिसर्च प्रेजेंट करना, उसकी टेस्ट प्रेजेंट करना कि ये वो कैसे टिकेगी, गवर्नमेंट से लड़ना, और उस करते करते आज 40 साल में ये इस तरह से पहुंचे हैं कि हम इनके साथ अब बहुत सारी बिल्डिंग्स आदि बना रहे हैं। मुख्यतः मैंने इनको बोला क्योंकि हम बहुत नींव जो मंदिर की बना रहे थे उसमें बहुत पैसा लगता था। अब हम इनसे अभी 5-6 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें हम मिट्टी की टेस्टिंग करके कैसे नींव का खर्चा कम कर सकते हैं। तो मुख्यतः ये मेसनरी बिल्डिंग्स की नींव कैसे कैसे बन सकती है उसके विषय में आपको बताएंगे। वो जब पिछली बार दिखाया था वो नहीं दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा, हाँ ठीक है। Pranams to everyone. Namaste. So, this session will be mainly sharing our experiences of working with different kinds of soils. As we see here, we have a black cotton soil. If you go somewhere else, you will get a rocky strata. If you go to other place, you can have soils which are very soft. So, you will not be able to say that only one kind of foundation is generalized for a particular technique. So especially when it comes to masonry foundation, we have tried to see how to work with different kinds of soils. So this presentation will give us some 3 to 4 different conditions so that we can understand the soil strata better and try to see how best we can conserve the materials. Yeah. Next. So very basic thing, before we go into the type of foundation, we need to tell a little bit about why is it very, very important. Like if you observe the old structures, especially temples and other things, the location of the land was such that it was very much viable to be built on that particular land. But in today's context, we get a land where we have to build. It's not a land which can be very good. It can be an old irrigation well. It can be a very rocky strata. So what will happen if we don't give much of importance to foundation? So this series of slides will tell us what are the complications. So it is basically, it undergoes what is called as settlement. Next. So what happens when a building settles? When the foundation yields, we call it as yielding of supports, you will have a lot of cracks if you don't do the attention to the foundation. A crack will be like this. Normally it will be in the inclined direction. Next. So everywhere you can see that there is a particular pattern. It can come in the walls normally when you do load-bearing masonry structures. So these kind of cracks indicates that foundation settlement has happened. It is very, very important for us to understand the soil. Next. Next. So the settlements can be so severe that a lot of times we can see it through and through. If you don't provide much attention, the walls get separated. The cracks will open up that you can see from this side to that side of the wall. So that's a very severe settlement like this what we see. Next. So we talk of arches, walls, domes very much. These structures are very much vulnerable for all these kind of settlements. So you can see here, a part of the arch has come down completely with respect to its original position. Even though we can treat all this later, but it will involve a lot of cost. So we have to be very, very careful about the soil condition. So we thought we will present this session especially to the foundation because of these reasons. Next. So this is a stone column. We all think that stone is very good material for us to be used in construction. And we prefer a lot of stones from various places. But stone is also very brittle. This is actually a column of a particular assembly hall which was built in 1960s. It was not now. But this problem happened in 2010, almost 50 years after its construction, 40, 50 years. That is because of the soil condition. Next. So why do this happen? It is basically due to different soil conditions. We call it as variation. Next. So you can see here, when you excavate a soil, you normally go to a certain depth and you assume that the entire soil layer is same.
But you can see here to get the same thickness variation, you have little different in depths. So when you put a structure on this, some part will deflect more, some part will settle less. So this leads to uneven settlements of the soil. Next. So all these are site conditions where we have got different soils in a particular pit. This is roughly 8 by 8 condition. So you think of a very big temple complex, so you have to be very careful about the soil. Yes. So you can see, to get the same depth or to get the same kind of a strength, we need to go to a different depths. Next. So you can also see the difference, almost 2.5 feet within the same depth. So if you don't provide attention, later during the service of the building, you will have a lot of settlement issues. Yeah. So this is irrespective whether you do it in masonry or reinforced concrete. In case of black water soil. Yeah. Black water soil is about depth of up to 20 feet. Yeah. Then what can we do? Yeah, we have a case study for that. I'll just present that also to you. Yes, we looked at it. We definitely have a small slides for that. We'll show it to you. Next. So this is another situation. Till now we saw the soil was very soft at different places. So this is in Hyderabad in the ongoing project. Here there is an outcrop of rock. It's a different issue. Here the soil will not settle, but the building has to be anchored properly to the strata. All these are very important because nowadays we can see that earthquake zones are being upgraded every 2-3 years whenever the earthquake happens. Earlier it was divided into 5 zones. Now we only have 4 zones, zone 2 to zone 5. So which means each and every place is subjected to earthquake. So we have to be very careful about detailing the building for earthquakes. So in these conditions, it's not the settlement, it's basically the anchorage of foundation which is very, very important. Next. Yeah, we'll skip this. Next. So we'll not go too much into technical thing. I'll just only tell you that in one of these locally available good wood, it has to be a solid wood. You cannot drive bamboo or any such material. It has to be a solid wood like that. And then you drive it. The diameter can be 3 inches, 2.5 to 3 inches. Next. So you can drive it manually like this. Next. Or you can also do it with the help of JCB. Next. Next, you skip this video. Yeah, you play this video. So you can see here, the entire wood goes down. So if you assume that you build the structure on this kind of a soil, how badly it would settle without treating it. So that is why soil is very, very important to be understood before doing this. आप सोच सकते हैं मिट्टी कितनी कमजोर है, कितनी आसानी से जेसीबी एक लकड़ी को अंदर डाल रहा है. तो जैसे ये थोड़ी थोड़ी दूर पे लकड़ी जाती जाएगी तो मिट्टी जो मिट्टी इसने दबाई वो मिट्टी साथ में आ जाएगी, तो उससे जब ये मिट्टी आसपास आके और डेंसिटिफाई हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी. Yeah, next. So once you drive it, you cut it about 3 inches above the foundation level and embed it into the PCC. Next. More or less it's like a friction pile, but it enhances the capacity. Settlements will be much lesser. So these are houses which have been built and we have been doing a lot of work with these kind of piling conditions. Next. So this is very, very important for the kind of soils what we see here. The soil is black cotton soil. It is called as expansive soil. So what is the peculiarity here? This soil will be very soft once it absorbs water and becomes very hard when it dries. So this movement will introduce a lot of cracks into the building. So we need to first treat the soil in this condition. Sir was mentioning, if we have 30 feet of soil as black cotton soil, what will we do? Just like penetrate this. Yeah. In case of water logging. No, that will not happen. Once you drive it straight into the ground using JCB, it will not. So if it is trying to have a lot of friction that it is not able to move, the wood will actually split. Yeah. So the wood will split. That's an indication you should not push next. So here we do what is called as lime piling. Lime is very, very important in treating these kind of soils. This will arrest the capacity of the soil to expand and contract. That is called as expansive soils. So here you can see, this is the depth. Even if you go up to 6 meters, the soil is just black cotton soil.
ये बोल रहे हैं जो यहाँ पे काली मिट्टी है अपने इस एरिया में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है नींव बनाने की। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लगभग 20-25 फुट तक जहाँ पे काली मिट्टी है, तो वहाँ पे नींव को कैसे बनाएं उसके बारे में ये आपको बता रहे हैं। Right. So you cannot remove that soil then. See, one application is if it is only up to 4 or 5 feet, the suggestion is remove the black cotton soil or expansive soil, put new soil. But as you mentioned, if it is 20 meters, 30 meters, you cannot remove. Cost will be very high. So the only method is okay. Right. Right, you can do piling and we have to look at the report and then try to suggest what is better. So here, it is subjected to lime piling next. So this is the indication. You can see, as you even walk towards the food court, you can see a lot of cracks like this on the surface. It indicates it is expansive in nature. Next. What do you mean by expansive? Yeah, the expansive nature is when the soil absorbs water, it increases its volume. The clay mineral in the soil increases its volume. And when it loses water, it shrinks. This expansion and contraction will result in lot of cracks in the building. That behavior of the soil is called as expansive behavior. That is exactly what is happening in our building. Right. Because there is a black cotton soil. Correct. We have come up with the pile foundation Right. all over. But Right. then there are so many cracks in the building. Yes, even if you look at the regular pile foundation, where you do it with reinforced concrete, lot of times we have seen even that the pile has failed because we don't do any checking. The pile might have failed, so that will introduce lot of cracks into the building. So that is why it is very important to treat the soil first, understand the soil and treat the soil. So this is the process. So like the wooden pile or the sand pile, we try to drive in lime piles. Next. So you can see here, it's a video, we can play. So here, we are trying to create a hole into the soil layer. This is the ongoing project in Chandrapur in Maharashtra. So you try to drive a hole. Here, the excavation was done up to 4 feet below ground level entirely, and then another 5 feet was treated with lime. So once you do the hole, you remove that pipe. Like this, and then refill that hole with lime. So what will lime do? When there is a water movement, the lime will react with the clay mineral and absorbs its swelling capacity. So it neutralizes its behavior. Back. एक्चुअली सर का कहना ये था, जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मी में जैसे जो काली मिट्टी है तो जो फट जाती है, और माने बरसात में जैसे पानी आता है तो फिर चिपक जाती है, तो एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं इसको। इसका ट्रीटमेंट देने के लिए सर बता रहे हैं कि इसका स्टेबलाइजेशन होता है, चाहे आप लाइम से कर दें चाहे सीमेंट से कर दें, ताकि उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाए। जो उसका स्वभाव गुस्से वाला है उसको ठंडा करना है। आचार्य श्री कहते थे कि चूने से ठंडा हो जाता है, तो वैसा ही प्रकल्प है कि इसको लाइम स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट। लेकिन सर No, cement should not be used. नहीं, Cement should not be used. नहीं, cement sterilization also a process. That is for densification. That's another process. Here, the expansive nature has to be neutralized, and lime is the material which can neutralize. Cement will not. लेकिन क्या दीदी, दोनों से ही स्टेरिलाइज होता है। There is so many process. नहीं, वो तो सुनो, वहीं की मिट्टी से करते हैं, वो लोकल से ही सब कुछ, सस्ता सुंदर काम है उनका। Let us carefully understand, we have been working very seriously trying to collect data. It is not just working in buildings, we are also involved in research, development, and we publish papers also. We have to be very careful in what we say. Portland cement doesn't work here. Please don't use Portland cement, it is not going to work. You have to use calcium hydroxide. See, this black cotton soil has a mineral called montmorillonite, whereas most of the other soils
like reddish soils or brownish soils, have a mineral called kaolinite. Kaolinite is a non-expansive or less expansive clay mineral. But here, when it has montmorillonite, it has that expansivity at a higher level. So only lime can work here because it has calcium. So calcium hydroxide or calcium oxide, when you put it in the hole, then the clay mineral will have a reaction with this calcium and they will form compounds which will alter the behavior of the mineral. That is the basis on which this is being done. Lot of geotechnical papers are available, how lime works. It is all very well documented. So please don't use Portland cement. It doesn't work. वो जो आपने क्यों वो जो आना है ना वो ईंट बनाना और We are not, yeah. So once you put lime into the hole, next, we put another layer of soil above it for about 2 to 3 inches. Yeah, next. So this is how in the site it has been done. You have spread a layer of another 3 inches so that even if it is trying to expand after treating in the hole, you have some amount of lime above to be absorbed so that it will not expand. Next. And above that, we do soiling. Soiling is very, very important in this condition. So with all this, if there is a pressure, it gets released into the stones like this, between the gaps in the stone. Next. And above that, you start with your regular leveling concrete and the structure above. Next. तो आप समझिए, पहले इन्होंने छेद किए, फिर उसमें चूना भरा, फिर उसके बाद 2-3 इंच की पूरे में चूने की एक लेयर बिछाई, उसके बाद फिर एक सीमेंट कंक्रीट की पीसीसी जिसको बोलते हैं उसकी लेयर बिछाई, और उसके बाद सोलिंग जिसको बोलते हैं पत्थर और सीमेंट का एक बेस बनाया, और उसके बाद रेगुलर कंस्ट्रक्शन शुरू की. Soiling is with sand, no cement in it again. हाँ, सोलिंग इज विद सैंड, स्टोन एंड सैंड. Yeah. So once you do it, then you start the building above. Next. So these are the buildings which has been done previous. So this was a very interesting example. I'll just take another 5 minutes. So this was done in 2014. We provided all the technical help, told them that it is an expansive soil, and we treated it with lime. Only last year, both sir and I, we got a call from the owner. Without trying to consult us, they had extended a utility area. And he said, we have a lot of cracks in the house, can you please come and see? Next. So when we went to the site, we saw that the entire building, which was treated with lime piling, behaved very well. There was no cracks. Whereas the places where he didn't do any lime piling, he thought we are using it to make him spend more without understanding. So he just went ahead and built this. So later we can see there is a lot of cracks in those areas. Next. You can see even the extended portion from the house he has not treated. There are cracks. Next. So the solution here now is to remove that and redo it with lime piling. Initially only if you would have listened and if you would have continued the same process, you would not have got these kind of problems. Whereas the main structure on the other side is intact. There is no crack, single crack inside the main house where it has been treated. Yeah, we need to get the geotechnical report properly done, understand the behavior of the soil. Like I'll show you in the next example. The clay mineral is expanding more than 180% its original volume. So depending on the type of clay mineral, we have to treat the soil. So we need a proper exhaustive report to understand the soil first. And there are a lot of methods to be treated. Next. So this was the assembly hall for a school building in Andhra Pradesh. This was built in 1960s, but it showed problem in 2010-11. So this is a stone column. It's not a RCC column. The entire stone column is out of plumb from its original position by 3.5 to 4 inches. देखिए ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि हम सिर्फ ये देख के बोलें कि पत्थर की बिल्डिंग बहुत मजबूत है. किसी भी चीज़ से हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस जगह बना रहे हैं, किस मिट्टी में बना रहे हैं, उस पत्थर के अंदर कोई इनहेरेंट क्रैक्स नहीं है, उस पत्थर का साइज़ क्या है, उस पत्थर की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो सब चीज़ों को जानना समझना, पत्थर की जो अंदर नसें होती हैं वो किस डायरेक्शन में चल रही हैं. जैसे लकड़ी और पत्थर में आप देखेंगे जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो किस दिशा में हैं.
तो उस दिशा के हिसाब से पत्थर का चुनाव करना। अब पत्थर की बिल्डिंग में ये बता रहे हैं कि पत्थर की बिल्डिंग में आप देखें कैसे पूरा का पूरा कॉलम वजन आने से खिसक गया। तो पूरी चीज को समझ के ही हम इस्तेमाल करें। Yeah, next. So you can see here, for the entire 20 feet, whatever is investigated. So then, what the solution was, we had to remove the entire columns. So the entire stone columns were removed, and then the soil was treated. We went 10 feet deep, next. And then we treated the soil for another 10 feet. We did the foundation and we connected it with steel columns, next. So this is how now there is a connection at the plinth level as well as at the top. Next. Next. So this is the foundation treatment what was done. Very important thing here which has to be noticed is only alternate columns had foundations. All the columns did not have foundation. This is very, very important. That is because when the soil gets wet, it increases the pressure. It can lift up the structure. In lot of places, the underground tank has over-toppled due to the pressure. So what we did, when we did the analysis, we found that the load which was getting transferred here was much less compared to the upward pressure. So we did the foundation for